success is a sense of satisfaction that you feel right from the core of your heart. And it cannot be measured. When you decide something that, okay, I want to achieve, I want to do this in my life, and you have a sense of purpose and the impact that that purpose creates on the people around you. So I am the youngest child in my family. I have two elder siblings. We're the three sisters. I have my parents, and I love psychology. I love interacting with people. I love taking part in discussions. Whenever is something productive going on, any productive discussion, be it social issues, be it any other kind of a discussion, could be anything like in mindfulness, meditations, mental health, or maybe solving some problems, or somebody wants to tell me something, okay, please sun lo yaar, aaj to meri sun lo wala. So I love to sit with them and just listen to them. This is I want to do. And yes, I love sports. I love cricket. I love watching it. I used to love playing it. I played that back in the day as well. For me, the perception of the world is the internal side of a human who is there. I know somebody is there sitting like right in front of me or right beside me. Of course, I can't see them, but the best part is I can feel them, and that's the world. That actually, this is how I see the world, and this is how I perceive the world. My schooling was done from a visually impaired, from a blind school to special schools which are dedicated for the visually impaired people and for the disabled people. And then I switched to a mainstream college. I became a part of it. It was again a little bit of a challenge because we had to convince a lot of people and say, okay, I have to study, and I really wanted to study. The only thing that I feel that I wanted my choices to remain alive. I really did not want somebody was there to tell me, okay, since you are visually impaired, so you cannot go anywhere. I just wanted to live this life fullest. IBA was there through the toughest times of my life, I would say. I remember I was struggling to find an institute to study psychology. During COVID times, we were actually applying for universities, and a lot of universities definitely they gave me admissions. They were not offering the subjects of my kind, and also a lot of institutions, I don't know, they did not respond. When I came here and gave my interview, they said, why IBA? I said, because I see my purpose here. I always think that instead of saying bichara, instead of saying, oh my God, ye kaise karegi, all of these words, I don't need that. And that's what I've seen at IBA. Provided me the equity that I wanted, and that is why I'm here and I am now graduating. जब हमने IBA से अप्रोच किया और बात की तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग था, लेकिन साथ साथ चूँकि लाइवा की हमें पूरी स्ट्रेंथ पे पूरा भरोसा था और हम उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे थे कि लाइवा कैन डू एवरीथिंग। तो उसी ट्रस्ट को रखते हुए सामने अगेन वही वाली बात है कि जो भी चैलेंजेस थे उसको हमने अपॉर्चुनिटी की लिस्ट बना के इसको स्टार्ट किया। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करता है और कोशिश करता है और कोई विश करता है तो अल्लाह ताला खुद ही असबाब पैदा कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि IBA की यहाँ भी वो फरिश्ता सिफत इंसान हमारे सामने आ गए। उन लोगों ने हमारे लिए मेहनत की, कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था और हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। एडमिशन होने से लेके उसके बाद ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के रास्तों को समझाना, गेट की एंट्री से लेके क्लास तक पहुंचाना और क्लास के अंदर पढ़ने वाली सारी सहूलतें अरेंज करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरी बेटी को एडमिशन दिया, मेरी बेटी को ये मुकाम दिया और आज मेरी बेटी ग्रेजुएशन हो गई उसकी। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने IBA से पढ़ा और मेरा शौक़ पूरा किया। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छी तालीम, क्योंकि मैंने इतनी तालीम हासिल नहीं की, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे करें वो तालीम हासिल। लाइवा जो है ना हमारी स्टार है, शी इज़ एन एंजल। मुझे लगता है हमारी फैमिली में लाइवा की जो एक
एग्जिस्टेंस है ना, आई थिंक दैट उसने हम सबको बहुत ही डिफरेंट रखा है. शी इज़ समवन जिसने इस दुनिया को शो की है कि डिटर्मिनेशन क्या होती है. My father told me that I want an identity from you, कि जब तुम बाहर जाओ तो लोग ये नहीं कहें कि अच्छा आपकी बेटी है लाइबा, बल्कि ये कहें कि अच्छा आप लाइबा के फादर हैं. वाह भाई. My dad told me that I don't need a gold medal. What I need is that you create an impact through your brain, through your learning, and of course being a part of this system. कभी बचपन में I used to say कि अभी पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त वो टूट जाते थे. They were like literally broken कि okay अब कैसे हिम्मत दिलाए. आज इनको मैंने बहुत खुश देखा है, फील किया है. when we were traveling, right, so she had this in mind कि यार मतलब ना मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन मुझे ये चैलेंजिंग फील होता है कि जो है आपके लिए ना वो डेफिनेशन ऑफ खूबसूरत है, मेरे लिए वो डेफिनेशन ऑफ खूबसूरत नहीं है, राइट. सो देयर वर टाइम्स वेयर शी इज़ क्राइड अलॉट कि बाबा मैं कैसे लाऊँ अपनी मोटिवेशन, लाइक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सिमिलर टू मी, राइट. सेम सिचुएशन है ना, राइट. अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और आप बोलें कि मैं यहाँ से कहीं और जगह पे जाऊँ, इट विल बी सेम फॉर यू, राइट. तो जब ऐसी सिचुएशंस आती ना, तो ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ क्राइंग टुगेदर, सो वी आर ऑल इन इट, राइट. You have 3 choices in life. First, either you give up, हार मान लें, either you give in, थोड़ा सा उठकर सोचे कि ठीक है कर लेंगे कुछ, और give it all we got. Like this is the third choice that brings you to the end of that purpose or that line that you have created in your life, or that line that you want to see. You really want to see yourself on that point. So when you give it all you got, you can achieve your purpose in life. And during a time when you reflect back, when you are on your integrity versus despair wala stage, you will feel that I have spent my life on the level of integrity that I wanted, and now I am satisfied.